अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट की बात करें तो आज के दिन हम कहेंगे मार्केट स्लाइटली नेगेटिव देखी जा रही है। ओवरऑल इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो सही दिखाई दे रहे हैं। डॉलर और रुपी पैरिटी की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ चीज़ें जो है वो रुपी एप्रिसिएशन की तरफ जा रहा है, और ख़ासकर हम कहें कि डॉलर। तो जैसे जैसे इकॉनमी की पोजीशन स्ट्रांग होगी, हमारे लिए हमारी करेंसी काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। एक्सपोर्ट इज़ दी ओनली सोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ दी ओनली सोल्यूशन। विंटर सीजन भी आ रहा है, जैसे जैसे ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी हमारे मुल्क की इकॉनमी के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और इकॉनमी के नंबर्स बढ़ेंगे तो मुल्क ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा, सक्सेस की तरफ जाएगा। सो आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है, और साथ साथ इकॉनमी के हवाले से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो क्या क्या हैं। सो फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे, जो कि ऑब्वियसली ये नीड ऑफ द आवर भी है, और साथ साथ ये एक इवेंट चल रहा है जो कि हमने कल भी प्रोग्राम कंटिन्यू किया था। आइडियाज़ के हवाले से बात करेंगे। आइडियाज़ एक इवेंट एग्जीबिशन कराची में आइडियाज़ 2022 जारी है। हम कह सकते हैं कि इट्स एन इवेंट, ये जो एक फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑब्वियसली इतने कंट्रीज़ हैं, 60 अबव कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। और हम ये भी देख रहे हैं कि उन कंट्रीज़ में जब वो आएंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से वो एक परसेप्शन लेके जाएंगे, पॉजिटिव परसेप्शन होगा, पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिव होगा, जो कि पूरी दुनिया में जाके बताएंगे कि वी हैव पार्टिसिपेटेड इन इट, और यहाँ पर जो है वो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी, ऐसा ऐसा बिजनेस था। तो आज हम आइडियाज़ के हवाले से डिस्कस करेंगे। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा इस इवेंट के अंदर मौजूद हैं। साथ साथ प्रमोशन जो कि जारी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नो डाउट बहुत अच्छी है, पोटेंशियल बहुत मौजूद है। इनोवेशन क्या क्या हुई है इस बार, वो भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ कुछ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर्स भी देखने में आए हैं। व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशंस आर हेल्ड, ये भी बात करेंगे। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा डेस्परेट हैं पाकिस्तान के साथ पार्टिसिपेट करने के, और पाकिस्तान किन कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अली भट्टी साहब, आप CEO एंड MD हैं वाह इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के, डायरेक्टर हैं एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टीफन बर्नार्ड, आप एग्जिबिटर हैं फ्रॉम UK, पब्लिशर फ्रॉम जर्मनी, यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो उस्मान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। उस्मान साहब, इवेंट लाइक आइडियाज़ इट्स रियली नेसेसरी कि हम देखते हैं बहुत अच्छे इवेंट हर 2 साल बाद पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद किए जाते हैं। दिस इज़ आई थिंक दिस इज़ आफ्टर 4 ईयर्स ये हुआ है, 2020 में पैंडमिक की वजह से नहीं हुआ। क्या समझते हैं आप, ये इवेंट कितना नेसेसरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका रोल? देखें, डिफेंस एग्जीबिशंस जो हैं ये डिफेंस इंडस्ट्री का एक खासा है, क्योंकि सारी दुनिया में डिफेंस इंडस्ट्रीज़ क्लोज्ड होती हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं। इतना इजी नहीं होता कि आप कहें कि आप किसी दूसरे मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री को विज़िट कर लेंगे। हमारी मार्केटिंग और हमारी सेल्स बहुत हद तक डिपेंडेंट होती हैं डिफेंस एग्जीबिशंस पे। दुनिया में एक 20 से ज़्यादा एग्जीबिशन का इंटरनेशनल स्केड्यूल चलता है, जो बाई एनुअल या एनुअल एग्जीबिशंस हैं, जो डिफरेंट मुल्कों में होती हैं। और ये एक कॉन्टीन्यूस साइकिल है, जो हर तकरीबन 2 महीने के बाद किसी ना किसी मुल्क में एक डिफेंस एग्जीबिशन होती है, जिसमें तमाम डिफेंस इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स इकट्ठे होते हैं अंडर वन रूफ, इन वन विंडो। दे मीट ईच अदर, दे एक्सचेंज आइडियाज़, दे कोलैबोरेट, देयर आर जॉइंट वेंचर्स, देयर आर MOUs साइंड एंड थिंग्स गो ऑन। पूरी दुनिया की एग्जीबिशंस में और आइडियाज़ में जो मैं समझता हूँ ख़ास बात है, या जो फ़र्क है, वो ये है कि ये हमारी एग्जीबिशन है। 4 साल बाद होने, आई विश के पिछले दफ़ा कैंसिल नहीं होती, लेकिन आप इमेजिन करें कि 4 साल में हमने कितनी बाय एनुअल एग्जीबिशंस अटेंड की होंगी, और उसके बाद अब हमारी बारी आई है। तो हम ये समझते हैं कि घर की बात तो घर में ही होती है ना, मज़ा तो अपने ही घर में आता जी, है। अब एक्चुअली बात यह है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू होस्ट दोज पीपल दैट वी हैव बीन मीटिंग इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स, कॉलीग्स, हमारे पार्टनर्स, कोलैबोरेटर्स, सप्लायर्स, बायर्स, कस्टमर्स, दे आर हेयर। दिस इज़ एन एक्साइटिंग इवेंट। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जितनी ज़्यादा एग्जीबिशंस होंगी और जितने ज़्यादा ऐसे मौके हमें मिलेंगे, वो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छे हैं और वो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छे हैं।
राइट आपने बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड की हैं तो मैं बारी बारी पूछूंगी बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टीफन से इंट्रोडक्टरी कमेंट ले लूँ स्टीफन डू कमेंट ऑन दैट हाउ डू यू फाइंड दिस इवेंट this is ideas 2022 and it is a rare event we can say that we just see it after 2 years 4 years this 4 time years. but every after 2 years we'll see that so how do you find that kind of event and how do you find Pakistani people here. I think the event itself is well up there with the international standard of events. It's extraordinarily well attended. It's extremely well supported by the Pakistani military and by the regional governments and armed forces as well, which is it's important, but it's also a mark of how successful a show is, I think. What Usman was saying, it is an exciting show. It's an opportunity which hasn't been around for, as you say, 4 years, to get that personal interaction going, which for a short while everybody thought Zoom and so on was going to replace, and which is now clearly not the case. People need that interaction. And from my particular perspective with the media is the oil in the machine that helps Obviously. that interaction. Yeah, no doubt. So I have found the show extremely well organized. As I say, very, very high standard. Some of the improvements in quality that we've seen over the years from the Pakistani companies in terms of not only the products but how they present themselves and how they present their products have been outstanding. And you also asked about the Pakistani people. I love it. It's everybody's very open. I got a few strange looks coming through the airport, but that was in a big coat, so that was unsurprising. But no, everybody's very friendly, very keen to help. I was standing in the show 3 times today, Okay. looking around, just seeing what was what, and those 3 occasions, somebody came up to me and said, do you need any help? Can I help you? That's unusual. Very hospitable. I was really touched. Right. उस्मान साहब डू टेल मी दैट ये ऑब्वियसली इन्होंने बहुत एक वेलकमिंग फील किया और बहुत ही ओवरवेलमिंग एक पाकिस्तान की तरफ से हॉस्पिटेबल सिचुएशन दी गई तो दैट्स रियली गुड कि एक पाकिस्तान होस्ट भी कर रहा है और ऐसे जब आप दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से पाकिस्तान के इमेज के बारे में बात करें और वो बताएं तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बात होती है सो उस्मान साहब ये मुझे बताइए जो आपने अपने लास्ट कमेंट में कहा है पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है आप समझते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं दैट काइंड ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं या फिर ये जो आइडियाज़ है इसके अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए है और दूसरा ये कि कितना बिजनेस पाकिस्तान कैप्चर कर पाएगा क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते फिर भी हम अपनी पोटेंशियल को वर्कआउट करते हैं देखिए मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ एन एवर ग्रोइंग सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि आज आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा रेलिवेंट रहेगी तो ज़ाहिर है टेक्नोलॉजीज़ नई आ जाती हैं हम इंडस्ट्री में हैं इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चैलेंज ही क्रिएटिविटी है सबसे बड़ा चैलेंज ही कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है मैं ये समझता हूँ कि और फिर कम्पीट भी आपने करना है ज़ाहिर है और सब चैलेंजेस किसी भी और इंडस्ट्री की तरह डिफेंस इंडस्ट्री पे अप्लाई होते हैं पाकिस्तान की अच्छी बात यह है कि हम रेजिलियंट कौम है हमारे पास बेसिक टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं हम उन चंद मुल्कों में से हैं जो वो कैलिबर्स ऑफ वेपन्स बनाते हैं जो हमारे पास हैं तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जो ये लाइंस ऑफ प्रोडक्शन रखते हैं जो हमारे पास हैं तो हम सेल्फ सफिशिएंट भी हैं हम आर्म्ड फोर्सेस को भी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं नॉट ओनली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज या वार इंडस्ट्रीज बट ऑल ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान विच आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ये बड़ा अच्छा आर्सेनल है और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और हमारा इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री का होना प्लांट मशीन का होना या इन रिसोर्सेज के होने से काम नहीं चलता तो क्या चीज़ चाहिए हमें एक ओवरऑल एनवायरनमेंट मैं इस बात की बात नहीं कर रहा कि लोग कैसे हैं या माहौल कैसा है नॉट दी ओवरऑल एनवायरनमेंट बाय दैट आई डोंट मीन दैट मेरा मतलब है कि बिज़नेस जो है ना ये कई पहियों वाली गाड़ी है
इसके अंदर रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट की स्टेज तक। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर हम एक इंडस्ट्री हैं और हम एक बड़ी इंडस्ट्री हैं, हमारे पास 30,000 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 14 फैक्ट्रीज इन द POF, मोर देन 150 प्रोडक्ट्स दैट वी मैन्युफैक्चर, लेकिन फिर भी तो हम किसी वेंडर पे डिपेंडेंट होंगे, फिर भी तो हम लोकल इंडस्ट्री से कुछ सप्लाईज के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, जो कि हमारी तो लोकल इंडस्ट्रीज होंगी तो पाकिस्तान की होंगी जी ना? तो लोकल इंडस्ट्री का होना, एग्जिस्ट करना इन द फर्स्ट प्लेस, और लोकल इंडस्ट्री का कंपैरेटिव होना और अवेलेबल होना आपको सपोर्ट करने के लिए, दिस इज नेसेसरी। उसके बाद स्किल्ड मैन पावर का होना, उस स्किल्ड मैन पावर का अवेलेबल आपको होना, कॉस्ट इफेक्टिव होना। उस्मान साहब, जब हमारे आप इतनी सारी चीज़ें पॉइंट जी। आउट कर रहे हैं तो क्या हमारे पास ये मौजूद हैं, क्या हमारे पास ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या हमारे पास ऐसे ट्रेनर्स मौजूद हैं जो ये तमाम चीज़ों को ट्रेन कर रहे हों और सब काम कर रहे हों? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं। इंटरनली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं, तभी तो हम ग्रो कर रहे हैं, तभी तो हर साल नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, तभी तो पाकिस्तान आर्मी को और आर्म फोर्सेस को ये चीज़ें हमारी इंडस्ट्री से सप्लाई हो रही हैं। इस बार POF के क्या न्यू प्रोडक्ट्स हैं आप समझते हैं कि व्हाट यू आर लॉन्चिंग दिस टाइम? इस बार अच्छा ये हुआ कि 4 साल के बाद एग्जीबिशन हुई, अच्छा, तो कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स थी जो 2 साल पहले लॉन्च नहीं हो सकी थी। ओके। तो POF ने बड़ा अच्छा एक कॉन्टीन्यूस ग्रोथ का फॉर्मूला रखा हुआ है। हमारी मेन फोकस 2 चीज़ों पे है, एक है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर। इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है, कंपटीशन को आप देखते हैं और जो आपका एंड यूज़र है उसकी फीडबैक पे आप चलते हैं। तो आपने कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है। हमारा R&D का डिपार्टमेंट, हमारा डिज़ाइन का डिपार्टमेंट, हमारे डेवलपमेंट सेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं पिछले 4 साल में। उसके अलावा 11 नई प्रोडक्ट्स अभी हमने डेवलप किए हैं। अच्छा। जी, हम हॉरिजेंटली भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम वर्टिकली भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हमने अपनी हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में 76-39 वेपन लॉन्च किया इस दफ़ा। नई स्नाइपर वेपन के वेरिएंट्स के साथ हम आए हैं। 76-39 जो क्लैशनकोफ कैलिबर है उसके हम नए वेरिएंट्स के साथ आए हैं। एंड एट द सेम टाइम हमने जो वर्टिकल इंटीग्रेशन आप कह लें, या हमने क्वाडकॉप्टर्स की तरफ गए हैं, क्योंकि हम एमिनेशन बना रहे थे ऑब्वियसली जी, और एमिनेशन की यूज़ के डिफरेंट मेथड्स आ गए हैं। जिस तरह मोटर बॉम्ब्स थे हमारे, अब ये फ्री फॉल में आ गए हैं, ये एयर ड्रॉप में आ गए हैं, तो इसके लिए क्वाडकॉप्टर्स हैं, UAVs हैं। तो हम UAV की तरफ गए हैं। हमने PCB फैक्ट्री नई लगाई है अपनी इंडस्ट्री में, तो अभी प्लास्टिक सर्किट बोर्ड्स और ये सब कुछ अब स्टार्ट हो गया है वहाँ पे, और हम ये सब चीज़ें डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को अब सप्लाई भी करेंगे और अपनी खुद कफालत के लिए भी अच्छी हैं। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हुई हैं विद रॉ मटेरियल, या इसका रॉ मटेरियल कहीं और से आया है? देखें, POF इस तरह से बनी हुई है कि हमें बेसिक रॉ मटेरियल से ऊपर की ज़रूरत नहीं होती चीज़ की। हमारे पास तमाम फैसिलिटीज़ इन हाउस मौजूद हैं। तो एक्सेप्ट फॉर कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बाहर से आई होंगी, अदरवाइज ये सब चीज़ें इन हाउस इंडिजिनसली डेवलप हो रही हैं। दिस इज़ रियली, आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि कोई चीज़ है ऐसी जो पाकिस्तान के अंदर खुद मैन्युफैक्चर हो रही है और देयर इज़ नो नीड टू इंपोर्ट एनीथिंग। जी जी राइट। चलें स्टीफन से बात करते हैं, क्योंकि मैं उनको भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहती हूँ। स्टीफन, टू कमेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एग्जीबिशंस, आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन अ लॉट ऑफ एग्जीबिशंस बिफोर, सो what do you think? You have a lot of stories right here to write, but what do you think about Pakistan's market, Pakistan's business? As defense business is a huge business and very developed, a lot of developed countries are doing this business. So how do you find Pakistan in it? That's a good question. Pakistan, I think there is some unrealized potential in the European market, which Pakistani companies tend to shy away from, because Europe is seen as very competitive, very expensive, very high tech. But very expensive. but one of the things that is has been an underlying aspect to European defence is the question of cost effectiveness, and we saw it back in the early 90s. We're seeing it again now, that there is a tendency among Western armed forces to use, for example, a $2 million missile to kill a $200 drone. That is not sustainable for very long, and I think it's a gap in the European market that companies in Pakistan, for example, would be able to exploit.
Generally, though, I think Pakistani companies tend to be looking more into the Southeast Asian and South American and in particular the African market, Okay. where they are extremely competitive and where the demand is also there. And Pakistani companies are generally very well placed, especially the tier ones like POF, HIT, and so on. And the component manufacturers are also, I think, more internationally competitive than they realize. Okay, you have told about the market of Pakistan, Pakistan's competition and competitive lines of Pakistan. What do you think about this exhibition? How you feel that what kind of business we will capture? Not only Pakistan, a lot of countries are participating. As I have already told you that 60 above countries are participating in it. So, how do you think that what kind of business we will capture this year? I think, first of all, I think it would be, I would like to be seeing more companies from international, the international market, the international companies. This is just me talking, I guess, but I feel that sure. there is an obligation amongst companies in, or countries, let's say, including the UK, including Germany, including France, to be more visible in the Pakistani market. Right. And more visible, that means by being at this show. This show is a fundamental part of the Pakistani market. Right. And it's necessary for international stability and balance that companies and countries should support each other. Obviously. Yeah. Need of the hour. As a Brit, I feel that it is particularly wrong that the UK is so low profile here. But that's a matter for the politicians. राइट चलिए जी उस्मान साहब प्लीज़ एक तो इनके कमेंट को भी फर्दर क्लैरिफाई कर दें और दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि एक्सपेंसिव है पाकिस्तान की चीज़ें ऑब्वियसली अच्छी चीज़ तो एक्सपेंसिव ही होती है मेरा ख्याल है कि नहीं हम एक्सपेंसिव नहीं है दैट वे पता है क्या है देखें पाकिस्तानी कंपनियां बहुत मुल्कों को बेच रही हैं अगर आप टोटल पाकिस्तानी डिफेंस इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस को काउंट करें तो देर आर मोर देन 30 कंट्रीज़ वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग एट द मोमेंट अच्छा जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं तो पहली बात है कि यही इस बात की गारंटी है कि आप कंपैरेटिव हैं तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली और ये जो एक्सपोर्ट्स होती हैं ये फॉर्मल टेंडर्स में जाके होती हैं ये प्रोजेक्ट विन करने पड़ते हैं ऐसा नहीं है कि एक फ्रेंडली बेसिस पे या कोई ब्रदरली बेसिस पे कोई नहीं देता तो जाहिर है जब आप compete करेंगे और आप अच्छे रेट्स पे compete मेरिट करेंगे पे और कंपटीशन पे जाके आप मैं विन समझता करते हूँ कि हैं हमारी कीमतें बहुत अच्छी हैं दूसरा ये होता है कि जब बाहर के मुल्कों के लोग देखते हैं तो वो तो आपकी देख रहे होते हैं कि प्राइस क्या है कीमत क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग का भी तो कॉन्सेप्ट लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी लागत भी वही हो जो आपकी कीमत है दो अलग चीज़ें हैं ना जी तो हमारी जो लागत है वो ठीक है फिर शिपिंग कॉस्ट्स आ जाती हैं बीच में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस शायद हमारे मुल्क में थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि हम इतने कॉस्ट इफेक्टिव हैं कि इन स्पाइट ऑफ हैवी लॉजिस्टिक कॉस्ट्स या बैंकिंग चार्जेस बहुत होते हैं थोड़े से लैग्स उसके बावजूद अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो द क्रेडिट गोज़ टू योर लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और फिर फर्दर डिस्कस किया जा सकता है कि उसके क्या कंपोनेंट्स हैं पाकिस्तान में थोड़ी लेबर उस तरह से चीप है कई और रिसोर्सेज हैं जो बहुत अच्छी जिस तरह डिफेंस इंडस्ट्री जो पाकिस्तानी है मोस्टली स्टेट ओन्ड है तो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री के उस तरह से खर्चे नहीं हैं प्राइवेट सेक्टर की तरह जी और फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं जिसकी वजह से आपकी लागत कम आती है चीज़ों के ऊपर आपकी जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स हैं थोड़े कम हैं तो मैं समझता हूँ हमारा स्ट्रक्चर ठीक है उस्मान साहब बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं दे आर मेकिंग मनी फ्रॉम दिस सेक्टर व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान कि पाकिस्तान भी इसी सेक्टर से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ अ गुड बिजनेस आप एक ह्यूज जो है वो अमाउंट चंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जी मैं असल में फोकस कर रहा हूँ इकोनॉमी पे मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाह रहा था जी जी देखें डिफेंस इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड इज़ अ पॉलिटिकल बिजनेस या दिस इज़ तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या जो एडवांस कंट्रीज़ जिनको हम यहाँ से समझते हैं
उनकी डिफरेंट डायनेमिक्स हैं फॉर रनिंग द डिफेंस इंडस्ट्री, उनके प्रोडक्ट्स की डायनेमिक्स भी डिफरेंट हैं। हमारा जो फोकस है वो क्या है? देखें, हमारा फोकस है कि आपने अपनी आर्म फोर्सेस को प्रोडक्ट सप्लाई करनी है कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे। आपके फंडामेंटल्स क्या हैं कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज सब्सटीट्यूशन हो जाए, बाहर से पैसा ना मंगाना, बाहर पैसे ना भेजने पड़े और आप लोकल चीज़ बना के दे दें। मोस्टली जिस तरह POF है वो आर्म फोर्सेस को कॉस्ट टू कॉस्ट सप्लाई करे, क्योंकि वी आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वी आर सपोर्टेड बाय द आर्म फोर्सेस। तो प्रॉफिट का एलिमेंट लोकल सेल्स में नहीं है। आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सिर्फ एक्सपोर्ट्स में से कमा रहे हैं। तो देखें, ये फंडामेंटल्स है ना। आपकी एक नेशनल प्रायोरिटी है कि आपने पहले अपनी फोर्सेस को सप्लाईज देनी है, फिर जो बच जाएगी चीज़ उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप डेवलप इस तरह हुए हैं, और अब काफ़ी चेंज आ गई है, अभी एक्सपोर्ट पे फोकस है। अब हर तरफ से इंस्ट्रक्शंस यही आती हैं, और जो भी द लीडर्स आई शुड से इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे ऑल वांट अस टू एक्सपोर्ट। लेकिन जो कि फंडामेंटल्स उसी तरह है, अभी तो कुछ टाइम लगेगा उसको चेंज होने के लिए। और जब कितना टाइम लगेगा? एक बहुत अच्छा आपने ये मुझे पॉइंट आउट किया है, एक टाइम की ही बात कर रहे हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ। एक तो आप ये आंसर देंगे, और दूसरा ये कि कोई भी आप वेपन या कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? देखिए, मैं थोड़ा सा फिर जाता हूँ फंडामेंटल में। बात यह है कि जब ये डिफेंस इंडस्ट्रीज़ लगी हैं तो आपका मकसद क्या था? आपका मकसद ये था कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, आपको बाहर से एमओ ना मंगाना पड़े जी। आप पाकिस्तान में अच्छी कीमत पे अपनी आर्म फोर्सेस की सप्लाईज पूरी करें। वो तो हम हर चीज़ में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर तो है। जब तो आपने जब आपने की 50 साल लगाए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, और आपने उसको स्ट्रेंथन कर लिया अपने कॉन्सेप्ट पे, तो कुछ चीज़ें रह गई ना। फॉर एग्जांपल, आपने सिर्फ वो चीज़ें डेवलप की जो आपकी अपनी फोर्सेस को चाहिए थी। ठीक है। आपने मार्केट देख के तो प्रोडक्ट नहीं बनाई थी। आपकी मार्केट तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस थे। अब जब आप कहते हैं कि एक्सपोर्ट करें, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू एक्सपोर्ट्स, तो क्या वो प्रोडक्ट्स मार्केट में रेलिवेंट है? नहीं है, या कोई नई प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी। मैं आपको ऐसी ही मिसाल देता हूँ। हम एक एमिनेशन बनाते हैं जिसको कहते हैं डुश का एमिनेशन, 12.7 इंटू 108। शुरू से हम वही बना रहे हैं, और वो हमारी लोकल यहाँ यूज़ होती है और पाकिस्तान में इंडक्ट हुई हुई है। अच्छा। अब जब एक्सपोर्ट्स की बात आई है तो हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें 50 कैलिबर एमिनेशन बनाना चाहिए, विच इज़ 108 इंटू 99। पहले 108, दिस इज़ 12.7 इंटू 99 एमओ जो अब हम बनाएंगे। हाँ। उसकी लेंथ चेंज हो गई है, बट इट इज़ एंटायरली डिफरेंट कैलिबर। अब ये बन रहा है फॉर फ्रेंडली कंट्रीज़, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन आ गई है। जब ये एमओ कंप्लीट हो जाएगा तो शायद हम लोकल नहीं बेचेंगे इसको, ये पूरा प्लांट ही, इसकी सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगी। जो आपने कहा ना टाइम कितना लगेगा, देखें हर कैलिबर का अपना सिस्टम है, अपना निज़ाम है। मुझे इस एक कैलिबर को स्ट्रेटन करने में तकरीबन 6-7 महीने लगे हैं, और जब मशीनें आएंगी लगेंगी और हम खुद भी उसमें बहुत सारा काम करेंगे तो हमें तकरीबन 1 साल लगेगा लगाने में। टोटल आप कह लें 18 मंथ्स में वी विल बी अप एंड रनिंग। एज अ लेमैन लैंग्वेज, जो आप ऑफ रिकॉर्ड मुझे बता रहे थे क्लाशनकोफ के हवाले से, तो आप मुझे वो बताइए कि अगर एक गन या एक आर्म बनाते हैं हम तो कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है? देखें, कैलिबर टू कैलिबर डिफरेंट होता है। अच्छा। कोई है ना, स्मॉल कैलिबर्स हैं, स्मॉल एमिनेशन है, फिर मीडियम कैलिबर्स हैं, फिर हैवी आर्टिलरी कैलिबर्स हैं। ये कैलिबर टू कैलिबर डिफरेंट होता है। लेकिन एक होता है चीज़ को इन्वेंट करना। मैं आपको ये कह रहा था कि जब क्लाशनकोफ बनी थी तो इट वाज अ 25 ईयर्स प्रोसेस फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड टू द सीरियल प्रोडक्शन। ओके। जी, अगर आप इसको गूगल करें, पूरी इसकी हिस्ट्री पड़ी हुई है इंटरनेट के ऊपर कि ये क्लाशनकोफ कैसे बनी और कैसे आई। आज की दुनिया में क्लाशनकोफ्स नहीं बन रही। अब जो न्यू चीज़ें इन्वेंट होती हैं आज की दुनिया, आज की दुनिया में इन्वेंशंस नहीं हो रही, इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। इन्वेंशंस तो आप रुक गए ना, अपग्रेड्स हो रहे हैं, डिफरेंट नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो वेरिएंट बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। मैं समझता हूँ 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स टाइम होता है यूजुअली। ओके। जी, जैसे आप देखें ना, क्वाडकॉप्टर है, UAV है, वो इन्वेंट तो हो गया है। अब तो आपने उसको इम्प्रोवाइज करना है, और इम्प्रोवाइजेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आएंगी उसमें इंस्टॉल होंगी और उसकी डिफरेंट नए नए यूजेस निकलेंगे, तो वो आगे उसको लेके। सो दिस इज हाउ इट इज ऑल गोइंग ऑन। राइट। जॉइंट वेंचर्स के हवाले से मुझे स्टीफन से बात करनी होगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि जॉइंट वेंचर्स किस कंट्री से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके हो सकता है? लेकिन जॉइंट वेंचर में मैं फिर कहता हूँ कि जॉइंट वेंचर आप क्यों करते हैं? जॉइंट वेंचर आप इसलिए करते हैं कि कोई चीज़ आपके पास होती है, कुछ कंपोनेंट आपके पास होता है, कुछ किसी और के पास होता है। तो क्या दूसरा कंट्री वो टेक्नोलॉजी शेयर करता है पाकिस्तान के साथ? कर लेते हैं। बात यह है कि डिफरेंट मोटिव्स हो सकते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जिस तरह के जॉइंट वेंचर्स हम करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में, हम ये देखते हैं कि हमारे पास वो क्या चीज़ें हैं जो फिक्स्ड असेट्स अवेलेबल हैं, लाइक प्लांट्स, मशीन्स, क्या चीज़ें हम बना रहे हैं, और कोई दूसरा मुल्क जिसने वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली हो जो हमें चाहिए, और हम सोच रहे हो कि बजाय इसके कि हम पूरा व्हील री इन्वेंट करेंगे तो हम उनके साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, मिल के बनाते हैं। एक तो ये जॉइंट वेंचर फार्मूला चल रहा है। दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान आर्मी इज़ अ बिग आर्मी, आर्म फोर्सेज आर बिग आर्म फोर्सेज। जब आर्मी की कोई डिमांड निकलती है तो वो लाखों यूनिट्स में होती है।
किसी फॉरेनर के लिए बड़ा मुश्किल होता है, किसी फॉरेन कंपनी के लिए उसको अपने मुल्क में बना के फिर शिपिंग करना, यहाँ लाना, उसकी आफ्टर सेल Right. सर्विसेज। तो हमारे पास तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो हमारी ऑफर ये होती है कि प्रोडक्ट आर्मी खरीदेगी, हम इसको पिच कर लेते हैं, लेकिन आप हमारे साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर लें। जॉइंट वेंचर्स एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं, लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी। और हम फ्रॉम टाइम टू टाइम लोकल इन्वेस्टर्स भी देख रहे होते हैं जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हों और जिनको नैक हो इस इंडस्ट्री का। तो इस तरह के कई जॉइंट वेंचर्स हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, वाह नोबेल ग्रुप ऑफ कंपनीज है POF में। इट इज़ ए जॉइंट वेंचर बिटवीन साब विच इज़ ए कंपनी इन स्वीडन एंड ए कंपनी इन सऊदी अरेबिया। दिस इज़ ए सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर मॉडल। हमारे पास सोलर पावर जनरेशन के जॉइंट वेंचर्स हैं जो चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ और इनके साथ हमने किए हुए हैं, तो वो बड़े हमारे सक्सेसफुल मॉडल्स चल रहे हैं। अभी हम मलेशियन कंपनीज के साथ देख रहे हैं, टर्किश कंपनीज हमारे पास आ रही हैं। तो ये दिस इज ए कंटिन्यूअस A lot of opportunities we are जी, getting. अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, पर वो पता इसलिए नहीं चलता मार्केट में कि जरा हम क्लोज्ड इंडस्ट्री होते हैं ना, हम Very confined कि जी, आपको हम ज़्यादा जरा open अपने up नहीं काम से होना। काम रखते हैं, इसलिए वो ज़्यादा Yeah. पता नहीं चल रहा होता बाहर के क्या हो रहा है। But you are doing great job. जी, जी। Stephen, just tell us about something, your experience in this exhibition, about how do you find that inventions, new technology, Pakistan's quality of products and new innovative products which Pakistan already displaying this year and a lot of years previously. Well, I'm sure Usman talked about some of them there, but I think keeping it relatively brief. The small arms developments in terms of quality is one of the important areas. It's not glamorous, but it's important. The remote control weapon station that I've seen, there's 2 of them in fact that I've seen at the show, Right. which are brand new to me at least, and I think brand new on the market actually. Right. This year? This year. जी, Okay. we are inaugurating Yours is Wow. one of them, I think. Wow. Yeah. Yeah. There is a trend, a global trend, unsurprisingly, for companies to get into unmanned air vehicles, UAVs, unmanned aerial systems, and so on. Particularly learning lessons from the Azerbaijan-Armenia war, and also from what's happening in Ukraine at the moment, where UAVs, UASs have been spectacularly useful, difficult to counter, and lethal when required. Okay. And there are a number of companies here at the show with brand new developments in this domain. And I think those are the key trends that I would say are readily apparent even just after the first day. You have talked already a lot of countries stall. You have already meet with the different countries stalls and representatives. How do you find that they're feeling about Pakistan, about exhibition? How do you find that? As a media person, you have to be, focus on your story as well. What people are thinking about this? I would say that the majority of the people that I've spoken with, that's the Italians, the Germans in particular, the Italians and the Germans in particular, are very, very positive, very optimistic. That's why they're back. There is a general recognition that while, as Usman I think said, the typical defence procurement or defence acquisition program can take many years, there is a recognition that in Pakistan that's no different. It takes time. The financial year, the budgeting year, is also slightly different in Pakistan, so international companies have to aim off to account for that difference. And taking that into account, they're here, they're back. The ones who are here are very positive. And I think as well, the show itself, I think Baat have done an excellent job organising this exhibition. I have seen a lot of delegations, international delegations, in uniform. I've been quite impressed. Yeah, By they the- are taking by the interest quality. in this exhibition. Yeah, they are. By the numbers, sheer numbers, and by the quality as well in particular. You've got some
very, very senior officers coming and visiting this show. Right. Usman sahab, just tell me that already Stephen has broadly expressed his feeling. So how do you find, क्या समझते हैं आप कि कितना अच्छा जेस्चर जाएगा पाकिस्तान का? इमेज भी ऑब्वियसली, मैं कल भी कुछ लोगों से मिली, डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनका ये कहना था कि वो फर्स्ट टाइम भी आए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की मार्केट के बारे में बहुत सुना है और यहाँ बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी है वो कि वो बिज़नेस अच्छा लेके जाएंगे. देखें, जो एग्ज़िबिशन है इसको आप सिर्फ एक एग्ज़िबिशन ना समझें, आप इसको एक प्रोफेशनल मार्केटिंग या सेल्स का इवेंट ना कहें. बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी टूरिस्टिक अपॉर्चुनिटी होती है. आपके मुल्क में इतने लोगों का आना, देखें मेरा ख्याल है 60 से ज़्यादा मुल्कों के लोग अगर पाकिस्तान आ रहे हैं और फिर हर डेलीगेशन में लोग हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्ज़िबिशन में. देखें, स्पेस ख़रीद रहे हैं टी डैप से, डेपो इज़ ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट. तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो मैं समझता हूँ कि डेपो को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बावजूद जी बहुत से चैलेंजेस के बावजूद इतनी बड़ी एग्जीबिशन करा लेना एक बहुत बड़ी सक्सेस है उनके लिए और हम सब के लिए. और ये जितने लोग आए हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. देखें, हम एग्जीबिशन के दिनों में एक यूजुअल रूटीन क्या होती है मेरी तरह के एक कॉर्पोरेट CEO की, स्टार्टिंग एट 6 o'clock in the morning till midnight, breakfast meetings, exhibition meetings, afternoon meetings, evening meetings, interviews एंड डिनर मीटिंग्स. तो ये सब क्या है? ये टच पॉइंट्स हैं जिसमें हम कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों को पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं. हमारे अपने लोगों के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो सब कंपनी से कराची आए हुए हैं और एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन को देख रहे हैं. तो ये सब, और फिर आइडियाज़ की एक्सचेंज है, मनी की सर्कुलेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकॉनमी है. आपको पता है इस वक्त कराची में होटल नहीं मिल रहा. They've all gone expensive. अच्छा, वो कराची, you already choose कराची for this. जी. कोई और शहर नहीं चुनते या फिर पाकिस्तान के लिए कराची का एक इट्स अ हब ऑफ इंडस्ट्रीज? जी, मैं एज ए यूज़र बता देता हूँ बिकॉज डेपो और गवर्नमेंट का डिसीजन होता है कि कहाँ पे करेंगे. मेरा ख्याल है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत हैवी इक्विपमेंट आता है बाहर के मुल्कों से. तो कराची में पोर्ट है, कराची में उसको ऑफलोड करके एग्जीबिशन तक लेके जाना आसान है. ओके. अगर आप कहें कि अब इसको ऑल द वे लाहौर लेके जाना है या इस्लामाबाद, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. जी, तो शायद वो लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं. फिर कराची बड़ा शहर है, कराची इतने लोगों को अकोमोडेट कर लेना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल एब्जॉर्ब. फिर कराची में सर्विसेज अच्छी हैं. आपने जैसे कहा कि कराची बिजनेस हब है, यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ और अवेलेबल हैं. तो मेरा ख्याल है इस वजह से कराची अभी तक चल रहा है और सो फार इट इज़ सक्सेसफुल. बहुत अच्छा चल रहा है. सो देयर इज़ नो प्लान कि आप कोई सिटी वगैरह भी चेंज करें या कुछ? नहीं, मेरा ख्याल है कि जी मेरे में नहीं है. लेकिन एक बात मैं ज़रूर ऐड करता चलूँ. अब ये 4 दिन की एग्जीबिशन होती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ये एग्जीबिशन सिर्फ 4 दिन है. नहीं, इसके पीछे तो आई थिंक अ लॉट ऑफ डेज, अ लॉट ऑफ मंथ्स यू हैव प्रिपेयर योरसेल्फ. और उसके अलावा एग्जीबिशन स्टार्ट होने से 2 दिन पहले ये लोग हमारी कंपनी में आ चुके थे, फिर वहाँ से यहाँ आए हैं और जब एग्जीबिशन खत्म होगी हमारे साथ जाएंगे वापस. तो फॉर देम इट इज़ नॉट ए 4 days इवेंट, फॉर देम इट इज़ 8, 10, 15 days वी आर गोइंग टू कीप देम हियर. अब ज़ाहिर है वो आए हैं पाकिस्तान तो अपने काम करके जाएंगे और जितनी भी बात, तो इसका एक स्टार्टअप होता है, एक प्रॉपर क्लाइमेक्स होता है बाद में. और सिर्फ एग्जीबिशन नहीं होती, इसमें हम इनको अपनी फैक्ट्रियों में लेके जाते हैं, हम अपने गैप एनालिसिस करा लेते हैं, जितने हमारे पेंडिंग काम होते हैं. तो देयरफॉर मेरा ख्याल है एग्जीबिशन एक बहुत अच्छी चीज़ है. एग्जीबिशन के बहाने ये लोग आए तो है ना, अदरवाइज़ लोगों के वीज़ाज अरेंज करना, इनको लेके आना, इनकी लॉजिस्टिक्स मैनेज करना. और फिर देखें, आज के ज़माने में आसान काम नहीं है पाकिस्तान में लोगों को इनकरेज करना कि आप आएँ फैक्ट्रियों में हमारे साथ जाएँ. सारा मुश्किल है. कोविड के बाद से तो ख़ास तौर पे चीज़ें मुश्किल हो गई हैं, लोग नहीं ट्रैवल करते उस तरह. कोविड के साथ साथ दूसरा ये कि हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जब से ये एक पॉलिटिकली धरना कल्चर, या फिर हम ये भी कहें कि थोड़ा सा इस टाइप की एक्टिविटीज़ से भी घबराते हैं लोग. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट कि इस टाइप के इवेंट कितना ज़्यादा एक माइंड चेंजर भी हो सकते हैं लोगों का भी, पूरी दुनिया की भी नज़रें पाकिस्तान के ऊपर होती हैं कि पाकिस्तान, ओ हो, दिस इज़ द कंट्री, ये तो एक अच्छा और ह्यूज बिजनेस कर रहे हैं, कंपेटिटिव मार्केट है. लेकिन बात यह है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए एज ए नेशन, एज ए कंट्री. हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी हॉस्पिटैलिटी है. हम अच्छे लोग हैं, जेन्युइनली हम अच्छे हैं, हम लोगों का ख्याल रखते हैं. जब लोग आते हैं उन्हें अच्छी तरह मिलते हैं. बिग हार्टेड पीपल, दिस इज आवर स्पेशलिटी. आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इट फॉर स्टीफन. या स्टीफन अंडरस्टैंड्स मोस्ट ऑफ उर्दू. आई नो हिम फॉर मोर देन 15 years now. आई एम श्योर he can get an idea of what I'm saying. He is blushing actually. Yeah. And I'm saying sadly not. So what I want to say is, Stephen, I'll say this one in English.
I'm saying that the biggest strength that we have, in my opinion, is our hospitality, our open-mindedness, our clear-heartedness. I think we need to bring more and more people, more and more foreigners. We need to open up on our visa policies. We need to open up on our tourism policies, because in the rest of my career, I've never seen anybody who has visited Pakistan and he was not happy. People are usually happy. We've got places. We've got, so there is a lot of scope. If we bring people and show them the real face of Pakistan, this dharna culture, as you said, or the political turbulence and all, this happens in every country. Yeah. But yeah, this is not only You Pakistan have specific. seen the example of UK, you have See, Italy. everywhere. Yeah, We have a lot of just seen the examples. attacks in Turkey, in Same Istanbul. you've seen. Yeah, so these things can happen anywhere, but more and more people coming to Pakistan would mean a very positive image of Pakistan. Business will come, business comes automatically when the basic fundamentals are right. So Exactly. Actually, Usman साहब, we need business. जी. हमें business चाहिए. We need business. We need FDI, foreign जी. direct investment, and we have to facilitate foreigners to come here to start their businesses, to come and do joint ventures with us. So what we actually need to facilitate them. So Stephen, please do comment on that first of all. Then I'll ask about the real face of Pakistan. How do you find that? I think what I was just picking up on what you were saying there, I think that it's essential that Pakistan, along with every other modern country, expands and focuses its expansion on the technological side of developments. So the STEM programs and so on that we see running around the world. In particular, it's not a case of getting away from the traditional, say, textile business, but it's a case of building separately from that. The textile business is fine and important, fundamental to Pakistan, but high tech is where the future lies. Yeah, there's a room. And well, there's room in Pakistan, certainly, on the high tech side, I think. And Pakistan also has the educational background that's necessary for that to happen, with the technical institutes, universities, and so on and so forth, as well as the natural aptitude of the people. So, yeah, expanding business is one thing, bringing in new business is another, but it's bringing in the right type of business. And that needs very often the right relationships at very senior, normally or often governmental level, to facilitate that, to make sure that you're keeping pace with the global technical developments and developments of technology in societies. Right. Stephen, actually I was talking about the real face as Usman was explaining that. So how do you find the real Pakistani face? And as Usman said, he knows you about 15 years. So have you tried any food? Have you been any place where Pakistan? I said I've been coming to Pakistan since 1997. Most of the time I've been coming to Karachi. I see the airport, the hotel, the exhibition, and then in reverse order, and then I'm gone again. The very, very few occasions, I think 2 occasions, when I've managed to do more than that, I've been enchanted. Okay, it's we are running out of time. Just have you tried any food? Just tell us. All the time. Which food? All of it. All the foods, okay. Usman, just a one-liner answer about ideas and about the perception of Pakistan to the whole world. I think having ideas was a very, very good decision. In spite of all odds that were going against ideas, it is a very, very good decision. And I think ideas has always brought a very, very positive perception for not only the defense industry of Pakistan, but overall defense industry. So very positive. Well, thank you so much, Usman. आपने program में join किया. Thank you so much, Stephen. I hope you have a lot of stories. You have a lot of writings from there, from Pakistan.
सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हमने बात की आइडियाज़ के हवाले से। 2022 जारी है, बिजनेसेस जो हमारी नीड है और बिजनेसेस ही करने आगे। पाकिस्तान की सक्सेस बिजनेसेस में है, हमें लोगों को फैसिलिटेट करना है। ऐसे ही इवेंट्स पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बिल्डअप करते हैं। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।